Okay, hi, and very good evening to all of you. Been quite a bit of waiting for the legal analysis. I think we were already doing the other analysis in the meanwhile, and therefore I was waiting for my turn. I know it's late in the night, but I also know that all the highly enthusiastic students have definitely been waiting very patiently, and I'm sure all of you are looking forward to the legal analysis. This is, of course, the maximum number of questions in any particular section was definitely in the legal section. जैसा कि पिछले साल भी था, we have about 40 questions in the legal section this time. So, without wasting any more time at all, let us quickly go into the first passage. At least जो question हमने देखे हैं उसमें जो पहला passage था, it was on contract law, particularly about mistake of fact. And ultimately, I think in this particular passage, the most important part was right here. Okay, agreement is void when both parties to an agreement are mistaken. Their mistake is as to a matter of fact, and the fact about which they are mistaken is essential to the agreement. This was definitely because of first, second, third में भी यही चीज बताई है. Firstly, secondly, right? Whereas all of that thing, however, if the mistake is about something which is essential and all of that, so these are the same points that ultimately have been directly highlighted when it comes to this particular portion. Further, it is pertinent that the mistake should not be a mistake of law. Mistake of law nahi hona chahiye. Mistake of fact is the only thing, not mistake of law. Right. So, having said all of these things, again, very standard. I think a lot of you would have already kind of done these kind of principles. At least you definitely know क्या mistake होता है, क्या mistake that is essential and all of that होता है. Right. Hi, Ishan. Very good evening to you. So, quickly looking at the first question, Mr. A entered into an agreement to sell his bicycle, which has been kept unused in his attic, to Mr. B at an agreed price. But the bicycle was already destroyed. Right? Bicycle was destroyed, which means the subject matter of the contract itself has already been destroyed. Therefore, this is a mistake जो दोनों parties का definitely हो रहा है यहाँ पर. Right? So, which of the following statements is true? Option A itself is already true. The agreement is void as both parties were under a mistake of fact as to the matter of fact, which was essential to the agreement. कि bicycle ही नहीं है जो मुझे बेचना है, तो obviously contract cannot be deemed to be a valid contract. Void का दूसरा option is option B, right? But it is option B में क्या लिखा है? Mistake of law, which is of course not true. It is a mistake of fact, and therefore A, I think, should be the best answer. For question number 67, again, reasonably easy question. ज़्यादा difficult नहीं था वो. Mr. X and Mrs. Y enter into a contract of sale for an article. While reeling under the erroneous belief that the sale of the article, which was the subject matter of the agreement, was permitted by the law in force in India. उनको लग रहा था कि ये permitted है, right? But if they were under an erroneous belief, right, that means their mistake is actually a mistake of law. So mistake of law में contract valid नहीं हो जाएगा, right? इसमें option A में थोड़ा सा confusion type का हो सकता है, but I think the better answer is option D, right? Because again, if you go back to the principle, mistake of fact अगर होगा and the other party is not doing, तो फिर it is not voidable. So the language used in the facts जो है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ भी होगा तो वो इनवैलिडेट नहीं होगा, तो नॉट वॉइडेबल, राइट? नॉट वॉइडेबल इज अ क्लोजर ऑप्शन, क्लोजर टू द प्रिंसिपल और व्हाटएवर द पैसेज दैट इज एक्चुअली गिवन. सो देयरफॉर 67 में ए और डी में अगर कुछ को कंफ्यूजन हो रहा है, बी एंड सी तो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन लाइक देयर इज नो वे बी और सी में से कुछ आंसर हो सकता है. ओके,
बिकॉज किसी एक का ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, वो तो हमारा होता है फ्री कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इस टाइप का कुछ होता, राइट? इस टाइप का कुछ अगर होता, देन इट वुड हैव बीन बी और सी, डिपेंडिंग ऑन हु हैज बीन डिफ्रॉडेड एंड स्टफ लाइक दैट. तो यहाँ पर वैलिड का ऑप्शन कंफ्यूजन हो सकता है, बट बिटवीन ए एंड डी आई थिंक डी इज डेफिनेटली अ बेटर आंसर, राइट? ओके, मिस्टर जे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद के फॉर द सेल ऑफ मिस्टर जेस क्लब, बट यहाँ पर कौन सा क्लब खरीद रहे हैं, कौन सा क्लब बेच रहे हैं, गोल्फ क्लब है कि क्लब हाउस है? There's clearly no meeting of the minds, right? The best answer should have been about consensus ad idem. वैसे तो better answer would have been about consensus ad idem, but there is no option which is directly talking about consensus ad idem, right? Now, mistake of fact defeated the consent? No. Mistake of fact misled the parties as to the purpose of the contract. Yeah, because one is thinking that my purpose is to buy the clubhouse, and somebody is thinking my purpose is to sell the golf club. So that kind of mistake is probably better, right? Consensus ad idem type का option नहीं है, void contract का option नहीं है. So out of the options, I think B would be probably the best answer. Again, answer key is yet to come out. Let's see what the Clat consortium ultimately says. कल सुबह दोपहर से पहले it says forenoon, not afternoon. If I don't know if you guys have managed to take a look at the notification, but अभी कुछ देर पहले Clat consortium का notification आ चुका है कि 20 जून को forenoon में the answer key, the provisional answer key and all that is going to come out. So that's the that is basically 12 बजे से पहले, कल 12 बजे से पहले का expectation जरूर है. Okay, 69 again was a pretty straightforward question. लीज डीड वो करना चाहता था, लीज की जगह गिफ्ट डीड हो गया है, राइट? नाइदर ऑफ देम वांटेड टू डू अ गिफ्ट, बोथ ऑफ देम वांटेड टू एंड अग्रीड ऑन अ लीज डीड, राइट? दोनों को मिस्टेक था. मिस्टर डी अग्रीड है ना, अननोन टू बोथ पार्टीज. हियर इट सेज अननोन टू बोथ पार्टीज, which therefore is kind of an obvious problem. Therefore here it is a mistake of fact, right? दोनों का ही मिस्टेक था, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए वुड बी द बेटर आंसर. बाकी ऑप्शन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप के थे. मिस्टर डी एंड मिस्टर के रिलीगेंट एंड मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ लॉ, ये तो नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हो गया है. मिस्टर डी वाज रिलीगेंट एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. सो अब ये दोनों में क्या कह रहा है कि सिर्फ एक का मिस्टेक है, सो इसलिए सी इज आल्सो रॉन्ग एंड डी इज आल्सो रॉन्ग. यहाँ पर दोनों का मिस्टेक है, सो फर्दर कॉम्प्लिकेशन पे हम जा ही नहीं रहे. आउट ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन ए is the best answer. Question number 70, if you look at the I think this is a question where there could be a disagreement between the Clat and what I think is the correct answer. Personally मुझे तो लगता है आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि क्या खरीद रहे हैं. So the contract is about the sale of an article, right? Contract is about the sale of an article. Now they had also agreed that it will be shipped through a particular ship and all that, और एक पर्टिकुलर तारीख को डिलीवर भी होना था, एक पर्टिकुलर जगह पे डिलीवर होना था. नाउ ऑल द अदर कंडीशंस आर ऑलरेडी फुलफिल्ड. बस मैं ए शिप की जगह अगर बी शिप से भेज रहा हूं, इज दैट रियली समथिंग दैट वुड बिकम एसेंशियल? आई थिंक इट वुड नॉट बी ट्रीटेड as an essential to the contract, because मुझे जो चाहिए था वो भी मुझे मिल गया है, जिस तारीख को चाहिए था that also I am getting, जिस place पे चाहिए था that also I am getting. It's just that how you've transported is just that's not something that should really matter too much. Therefore my answer is option C. So general mistake of fact and all that. Hi Manisha, sorry I was not looking at the chat box. I'll quickly take a look. Manisha, you marked option A for which question? Sorry. Webber is 31.25. Is it good or bad in legal? 31.25 I think is a good answer. Good score, I mean, as far as legal aptitude is concerned. If you look at the analysis that I had taken earlier in the evening around 7 p.m, मेरे हिसाब से anything above 27, 28 is basically a good score. So 31.25 so anyway is certainly a good score. Hi Asika, very good evening. How are you doing? कैसा रहा सबका पेपर?
Manisha, which question did you mark? Option A. Okay. The next passage again was about the simple concept of monism and dualism under international law. मोनिज्म में क्या है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होता है उसको अलग से स्टेट के इंटरनल या डोमेस्टिक लॉ में अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? अपने आप इंटरनेशनल लॉ बिकम्स पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ और म्युनिसिपल लॉ, whereas डुअलिस्टिक थ्योरी में, डुअलिज्म में, like we have in इंडिया में डायरेक्टली ट्रीटी डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ, ट्रीटी को अलग से हमें लीगली अडॉप्ट करना पड़ता है, देन ओनली दैट इंटरनेशनल लॉ विल बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक। यूएस में ऑन द अदर हैंड दिस इज सो, इफ यू लुक एट लीगल प्रिंसिपल, मॉनिज्म को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट? आप इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़ोगे, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड डुअलिज्म को हम कहते हैं दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेसिफिक अडॉप्शन, राइट? जब तक अडॉप्ट नहीं हो जाता है तब तक इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ का पार्ट नहीं बनेगा, whereas इनकॉर्पोरेशन में अपने आप वो डोमेस्टिक लॉ का पार्ट बन जाता है। that's the whole fundamental idea as far as monism and dualism is concerned. Now 71, इस क्वेश्चन में, इस पैसेज में भी जो 5 छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इन लाइट ऑफ द पैसेज, which of the following statements is absolutely correct? 71 में I thought now option A, if you look at monism and dualism are similar approaches to adopt international law and domestic, ये तो clearly not correct. Dualism postulates homogeneousness of domestic law and international law. Not true, not true, because dualism में अलग से adopt करना जरूरी होता है, right? So A और B तो easy rejection है, but C, monism and dualism are different approaches to understand how domestic law impacts international law. How domestic law impacts international law nahi hai. That's not the purpose of either of these. If anything, international law, how it affects domestic law is probably a better way to look at it. So C सिर्फ इस वजह से, क्योंकि पूरा उल्टा ही दिया हुआ है, right? That's why I don't think C can be the correct answer. Out of all the options, मेरे हिसाब से D is the best answer, because monism postulates that homogeneousness of international law and domestic law, because they can be seamlessly applied. International law automatically becomes part of domestic law, you know, and so on. So that's how 71 में तो कम से कम मैंने D mark किया है. For the valid or voidable one, the second question you took. I see, Manisha. Yeah, that one I think I'm pretty convinced उसमें not voidable वाला option थोड़ा better होगा. But मैंने उस question में बताया भी है कि you know option A is not a bad answer. It's just principle से या passage से जो है वो ज़्यादा closer है, जो ऑप्शन मैंने मार्क करके आपको बताया, राइट? बट लेट्स सी, मे बी यू आर राइट एज वेल, इट्स ऑल पॉसिबल। क्लैट कमिटी का भी कोई ज्यादा भरोसा है नहीं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, एंड वी कैन आल्सो टेक अ रीलुक एट इट। तो आई एम प्रीटी श्योर ऑप्शन ए मुश्किल है उसमें करेक्ट होना, है ना? ओके, 72 was directly about this climate change convention, और इसमें again ratified, not ratified और ये सब का इशू हुआ था। इसमें X is obviously a dualistic state, क्योंकि X में अलग से इनकॉर्पोरेट करना पड़ा था, राइट? X कंट्री में अलग से इनकॉर्पोरेट करने का नीड आया था, सो X is a dualistic state, एक ही ऑप्शन है। बोथ X एंड Y तो बिल्कुल डुअलिस्टिक है ही नहीं, राइट? Y में Y ऑब्वियसली मोनिस्टिक स्टेट है, क्योंकि यहाँ बिना अडॉप्शन के भी वो अलग से मान के हम चल रहे हैं कि इट हैज ऑलरेडी बीन incorporated, right? So that's why now sorry, has not incorporated provisions that are till date. Why has been appreciated by international. So now I think in this question B और D, ये दोनों ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होने का स्कोप बहुत है, राइट? बिकॉज Y has not incorporated the provisions, but the question does not actually make it clear कि वो incorporate नहीं किया है अलग से, तो डोमेस्टिक लॉ का पार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? So I think one way or the other you have to assume कि because Y has been appreciated by the international community, that means they've already
इवन दो दे हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर रहे थे और फॉलो करने की वजह से ही उन्हें बहुत सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी का अप्रिसिएशन मिला और ये और ऑल ऑफ दैट. ऑल्दो अगेन आई थिंक क्वेश्चन डज नॉट मेक इट क्लियर कि वाई कंट्री में इनकॉर्पोरेट करने का रिक्वायरमेंट, was it necessary to incorporate or was it automatically part of domestic law? That part is not clear. क्योंकि अगर incorporate करने का requirement था तो ऑप्शन दिल्ली आंसर हो जाएगा, because x and y then both will become dualist states. But अगर automatically वो उनके law का part बन चुका है, then option Bombay is the correct answer because dualist and y then becomes a monist state. So again, I would personally I would have marked option Bombay probably, but I think this question is a little unclear in terms of exact conclusion that can be derived. Right? Okay. Question number 73. क्योंकि डुअलिस्ट स्टेट है तो इसलिए अडॉप्ट करना जरूरी है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. राइट? डी, इफ द डी इज कंपेल्ड देन डी मस्ट इनकॉर्पोरेट द प्रोविजंस, तब जाके ही हो पाएगा किसी एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक लॉ में या नया लॉ बना के, क्योंकि डुअलिस्ट स्टेट मतलब एडॉप्शन की जरूरत है. दैट इज कंट्री लाइक इंडिया फॉर एग्जांपल, लाइक 2005 में इनफैक्ट हुआ भी था. इन 2005 हमारे WTO के ऑब्लिगेशंस बहुत सारे आ गए थे, एंड यू विल सी कि 2005 में हमारा पेटेंट एक्ट और ये सारे एक्ट जो हैं अल्टीमेटली वी हैड अमेंडेड. पेटेंट एक्ट 2005 का अमेंडमेंट हुआ था. ये मतलब अमेंडमेंट एक्ट है, एक्ट तो क्योंकि थोड़ा पुराना है. राइट? एक्ट इज 1970, एक्ट इज 1970 का, बट 2005 में अलग से इसको अमेंड किया गया था ट्रिप्स के प्रोविजंस को और ये सबको करने के लिए, which is exactly what option C says. Right? Question number 74, the correct answer again should be option C. Right? According to dualism, which of the following statements is incorrect? Just to be clear. So ये clearly incorrect है. Dualism में ratified international conventions automatically, dualism में automatically नहीं होता है, dualism में अलग से अडॉप्ट करना पड़ता है. So which of the following statements is incorrect जब पूछा ही है, option C is clearly incorrect. Clearly incorrect. Okay. 75 again my answer there is option C here. Right? Because again अगर dualist state है then Mr.A cannot be punished under the convention. That is absolutely correct. क्योंकि अगेन डुअलिस्ट स्टेट में आपको अलग से अडॉप्ट करना पड़ेगा. नाउ ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, इन दिस क्वेश्चन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी बिकम्स द मेन चैलेंज इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज ए में भी उसका उल्टा ही लिखा हुआ है. अगर मोनिस्ट स्टेट है तो पनिश कर सकते हैं, अगर मोनिस्ट स्टेट है तो पनिश कर सकते हैं. राइट? बट इफ यू लुक एट द कन्वेंशन इटसेल्फ, convention has neither defined bribery nor prescribed a punishment. So convention को तो वैसे भी अगर directly apply भी करेंगे, there is no punishment under the convention, which means it has to be based on the domestic law. जो भी law अलग से पास किया जाएगा उसी law के हिसाब से punishment दिया जा सकता है. convention में तो punishment दिया ही नहीं है. therefore option A को मैंने ultimately reject कर दिया, and I think option C therefore is the better answer. Right? So that takes care of passage 2. Are there any questions? I don't see too many questions there. सबको सब समझ में आ रहा है? I think pretty straightforward till now. बहुत difficult paper तो definitely नहीं था. Third passage basically was about bigamy and all of those principles. Again बहुत ज़्यादा मुश्किल passage नहीं था, simple type का था, straightforward type का था. Question number 76 में we have marked option C. Right? Validity of the first marriage is not getting affected in my opinion. Right? Now अगर question होता about whether this person can be punished or not, whether there exists some kind of liability or not for bigamy and all that, तब बात और होती. But here the question is not about punishment or liability under bigamy. The question is simply about the validity of the first marriage.
which obviously does not clearly does not get affected. Question number 77, I would think both A and B, because bigamy is punishable under Hindu law relating to marriage for sure. उसमें तो कोई doubt actually है ही नहीं, right? Now the passage actually does not say कि if you have converted, in case of conversion, नॉर्मल पिनल लॉ में लाइबिलिटी है या नहीं है, द पैसेज इज साइलेंट. ओके, नाउ बिकॉज द पैसेज इज साइलेंट, देयरफॉर बोथ ए एंड बी मार्क करना यहां पर थोड़ा रिस्की हो सकता है. वैसे आई थिंक बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट पैसेज में पिनल लॉज के कन्वर्जन के बाद भी पिनल लॉ में होगा कि नहीं होगा, इट्स लिटिल अनक्लियर. A is probably safer in terms of the answer, but both A and B is also perfectly correct, right? Both A and B भी correct है, क्योंकि penal law में होता तो है. अब वो additional knowledge apply करेंगे या generally sticking to the principle अगर completely करेंगे, then तो option A alone becomes the more correct answer. Question number 78. First marriage यहाँ पर valid ही नहीं था, तो ये तो काफी easy question. जब पहला मैरिज वैलिड ही नहीं है, राइट, देयर मैरिज वाज नॉट सोलेमनाइज्ड एज पर हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज बट वाज परफॉर्म्ड बाय सीकिंग ब्लेसिंग्स. तो ब्लेसिंग्स से शादी वैलिड नहीं होती है. तो फर्स्ट मैरिज जब वैलिड नहीं है तो सेकंड मैरिज में बाइगमी का कोई इशू आता ही नहीं है. दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 79 आल्सो. नाउ हियर हिंदू लॉ का इशू नहीं है बिकॉज रिलीजन पी लिखा हुआ है. So here it doesn't say Hindu religion, right? Here it doesn't say Hindu religion. Therefore, whether this is the after conversion wala jo Hindu law mein diya hua hai. Hindu law mein, if you look at the passage, it says even if somebody is converting, and then converting into a religion जिसमें bigamy allowed है, and then you are getting married, then also under Hindu law it is still punishable, right? So if it is still punishable under Hindu law, but here it is not Hindu religion, so therefore both B and C की जगह I would probably think option B is slightly safer, but again this is also a little dicey. It can be argued very easily from the other side as well. Please understand, it's easily juxtapose कर सकते हैं कि same rule फॉलो करेंगे या इस टाइप का कुछ होगा, आर्ग्यू करके. बोथ बी एंड सी इज अ प्रीटी डिसेंट आंसर. तो पर्सनली आई थिंक बी इज जस्ट अ लिटिल क्लियरर एंड जस्ट अ लिटिल सेफर, राइट. क्वेश्चन नंबर 80 अगेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. ये वर्ड बहुत हर बार ध्यान रखना है, राइट. Marrying again during lifetime of a husband or wife is a precondition for performing a valid Hindu marriage is absolutely not true. Absolutely incorrect statement है, right? Incorrect statement है, obviously. Therefore, which of the following is incorrect में option 80, question number 80 में option A करके हम आगे बढ़ सकते हैं, right? Okay, moving on. The fourth passage was about two freedoms in particular and reasonable restrictions, right? जैसे आप article 19 में ये सब words देखोगे, this is the whole heart of the various freedoms, and यहाँ पर दो freedom की बात हो रही है. right to move freely throughout the territory of India, ये बात ध्यान रहे, इंडिया में, and the right to settle and reside anywhere, again इंडिया में, right? so ये बातें बस थोड़ा ध्यान रखना है. let's look at the questions. 81 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. ऑब्वियसली देयर इज, इट्स अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. आप हेलमेट पहन के बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं. हेलमेट पहनने का रिक्वायरमेंट अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में तो कभी भी नहीं आएगा. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, आप लोग सब हेलमेट पहन के ही चलते हैं. आई होप स्टे सेफ, है ना. इट्स जस्ट नॉट वर्थ द रिस्क नॉट टू वेयर अ हेलमेट एंड सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 82 अगेन आंसर शुड बी ऑप्शन बी. because this is a threat to public order and so on. Public order का ground तो दिया नहीं है, but interest of general public is specifically provided as a ground. Here option B should be the correct answer for question number 82. Guys, I'm just going through these questions with the assumption
कि आप लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर करके आपको हैरास नहीं करना चाहता हूँ, राइट? बट इफ एनी ऑफ यू हैव want to just go through this with a little more eye to detail and all that, please feel free to pause the video later on. जब आप ये सेशन हो जाए फिर से देख लो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू फील फ्री टू रीच आउट टू एनी ऑफ अस, राइट? इन द मीनवाइल, क्योंकि आप लोग कर चुके हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू द क्वेश्चंस. कहीं मुझे लगेगा कि देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट, देन ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली मेक श्योर to explain. All right, question number 83. Question number 83. यहाँ पर the issue was externment order, right? Narcotic drugs and all of that is तो फिर तो obviously this is a reasonable restriction, right? Because you are obviously a big threat. Several cases of riot भी है, criminal intimidation भी है, narcotic drugs का business कर रहे हो, right? Basically आप डॉन पाब्लो की तरफ जीवन को ले जाना चाह रहे हो, तो restriction तो बिल्कुल reasonable माना जाएगा. 83 is option A. 84, here it's very important. वहां पर आप लोग को मैंने बताया था freedom to move freely across the territory of India. टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात है, राइट? यहाँ पर आप स्पेन जाने की बात हो रही है और पासपोर्ट सीज किया गया है, which is obviously that is simply not a problem. Therefore 84 में हम क्या करेंगे? Cannot challenge the letter because इंडिया में मूव करने का फ्रीडम उसका रेस्ट्रिक्ट हुआ ही नहीं है, राइट? There is no restriction on Indian freedom. Which of the following statements, again this keyword that all of you have to always remember, again this keyword has come, right? And इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन डी, बिकॉज लेजिस्लेचर के सामने चैलेंज नहीं होता है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ चैलेंज करना है, दैट चैलेंज इज नॉट बिफोर द लेजिस्लेचर, दैट चैलेंज इज बिफोर द कोर्ट, राइट? ये लेजिस्लेचर की जगह अगर कोर्ट होता तो फिर सब कुछ सही था, बट यहाँ कोर्ट नहीं है, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत है. ओके, पैसेज नंबर 5, राइट? 50% हमने डिस्कस कर लिया है. दिस वाज वन ऑफ दोस पैसेज, इट्स दिस लुक्स मोर लाइक एन इंग्लिश आरसी. नहीं, इलीगल तो लग नहीं रहा है, हाँ? इंग्लिश का आरसी ज्यादा लग रहा था ये वाला, बट ठीक है. क्या है? एंथ्रोपोसेंट्रिक है और एक इकोसेंट्रिक है. दो टाइप का है. दिस इज अगेन लाइक आई सेड, आई डोंट नो व्हाई दे आर इवन सेइंग दिस इज अ लीगल पैसेज. दिस इज certainly more about general English passage for sure, but ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कहानी अलग से ऐड कर दी है, तो देयरफॉर मे बी वो लीगल की बात हो गई है. भारत का संविधान है ना, जैसे ही आया है, मे बी वी शुड जस्ट अज्यूम दैट इट्स अ लीगल पैसेज. ठीक है. एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, सब कुछ प्रोटेक्ट करना चाहिए, और दो अप्रोच जो है उसमें देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द टू. क्वेश्चन नंबर 86. I would think this is ecocentric, right? I would think this is ecocentric because ultimately you are simply trying to study and create a favorable habitat for for butterflies and so on. But यहाँ पर वो habitat पहले से बना चुका था to study the butterflies. Therefore, I would think out of the options, क्या हुआ? Sorry, out of the options, Delhi is probably the best answer. Which of the following statements is correct है यहाँ पर? यहाँ incorrect नहीं है. हर बार incorrect नहीं पूछा जाता है, वो भी हमें देखते रहना चाहिए. Anthropocentrism and eco-centrism are different approaches to protection of environment and sustainable development. तो achieving sustainable development होगा या ये थोड़ा wider है? Protection of environment and sustainable development. So A is also very very similar. Just that D में थोड़ा wider connotations provide किए गए हैं, right? So क्योंकि wider connotations है, therefore D is a slightly better answer, क्योंकि environment का protection भी obviously passage में discuss किया गया है, right? So now question number 88. The main difference is obviously humans and non-humans का inherent value अलग है, right? Because in ecocentrism we assume that non-humans also have similar value because overall nature को preserve करना है and all that. But in anthropocentrism, obviously human beings have a higher value compared to the
non-humans, right? Okay. 89, I would think option A is again the correct answer for this question as well, right? There is a corresponding duty to protect and preserve non-humans. There is a duty. If you look at that language जो passage में दिया हुआ है, again let me just quickly go back to the ये वाला जो part है. The Constitution of India protects not only human rights but also casts an obligation on human beings to protect and preserve a species from becoming extinct. Conservation and protection of environment is an inseparable part of fundamental right to life. So species को भी protect करना है, non-humans को भी protect करना है. All of that has to be done. So if you look at 89, preservation of non-humans is also an essential part of our constitution, right? Conservation of environment is also an essential part, and so on. So 89A out of the options A is the best answer. Public trust का क्या है? Again इसमें फिर से incorrect है, हाँ, फिर से incorrect है. Please remember. Therefore, option C here is the correct answer. State is obligated to maintain the forest for their economic value. No, it is for their inherent intrinsic positive impacts and all of that. तो सारी चीजों के लिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिर्फ उनके इकोनॉमिक वैल्यू की बात नहीं हो रही है. It is not only about the economic value, it is about more things. Yeah, sort of passage came in English too. Oh, I see. International law impairs. Ideal score in legal is anything above 28, I would think. 27, 28, 30 ke around is a very good score. Sujal. Anjali, 87 can be C too. 87. Okay, I'll just quickly. 87 में कुछ लोगों को क्वेश्चन है. Eco-centrism is concerned with promotion of both human and non-human interests. Interests may not be the right word. I mean, I agree. It's very, very possible. C is a very good answer. अगर किसी ने C mark किया है, right? The reason why that non-human interest की बात है ना, human interest is not a priority. Protection of everyone is the priority, right? So, non-human interest may not only other species, but it's just wider because you're generally protecting the clean air and environment and everything. So between C and D, I thought D is slightly better, but I agree with you guys. Matlab C is also a very good answer. There is no doubt in my mind. C is also a good answer, and thank you so much for asking that question. It's a good answer. I just think D is a cleaner and just comparatively a better answer. That is why I went with option D. Right. Okay. Moving on to the last 2-3 passages जो बचे हैं. Secularism and the idea of taxation for the purpose of religion, जो हमारा पूरा article 27, right? Article 27 is basically this part, right? No person can be compelled to pay any taxes, और ये वो पूरा directly article 27 से ही derived है, right? Again, decent passage. Question number 91. Quite dicey all of these questions. I thought इसमें सही में मतलब क्लैट जो बताया आंसर हर तरफ से आर्ग्यू करना बहुत आसान हो जाएगा, at least in 1 or 2 questions. Here of course they are not promoting or maintaining Hindu religion, right? Because पानी वैसे भी general public सभी लोग यूज कर रहे थे and so on. So यहाँ पर promotion of one religion की बात नहीं हो रही है. 92 में अगेन सबके लिए इक्वली वो जहां जिसका भी डैमेज हुआ है सबका रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? दोनों रिलीजन का रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो देयरफॉर अगेन दिस इज नॉट अ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड देयरफॉर हियर अगेन ऑप्शन बी बॉम्बे इज द राइट आंसर. अब इस क्वेश्चन में ये हुआ दैट दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग only one of the religions. बट अगेन पब्लिक फंड से रिस्टोरेशन करना, अगर एक पर्टिकुलर जगह का कर भी रहे हैं, यहां पर किसी एक टैक्स को कलेक्ट कर नहीं रहे हैं. एंड इफ यू लुक एट द पैसेज, राइट, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है,
This does not prohibit the state from enacting a law to incur expenses for the promotion or maintenance also of a particular religious or religious domination or denomination. But by such law, no person can be compelled to pay any tax. So, ठीक है, again, specific tax नहीं charge कर सकते for any particular religion and all that. But किसी law से अगर किसी specific religious structure वगैरह को restore कर रहे हैं, I would think it is probably permitted in line with the passage, right? क्योंकि prohibition नहीं है, complete prohibition नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, and stuff like that. So again, I would think C यहाँ पर, but this one is I think going to be decently controversial. Possible है इसको कुछ और argue करना भी possible definitely है. 94 is not a very difficult question. इसमें जरूर हुआ था कि specifically pilgrimage tax ही अगर हो रहा है तो वो तो गलत ही बात है, right? It is violative of the constitution because pilgrimage tax एक particular religion के लिए ही किया जा रहा है, which is something which is directly prohibited. पूरे passage में यही ही चीज है जो categorically prohibit किया ही गया है. 95 again option A and option कहाँ गया था? It is not violative because it's proper administration of religion, and it is not violative because its object is of fostering Hindu religion. So now अब बात हिंदू रिलीजन को फॉस्टर कर रहा है इसलिए नहीं है, राइट? बात ये है कि this falls within one of the exceptions, right? That you can enact a law जिसमें हम अलग से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, राइट? बट उसी जगह पे जो जा रहे हैं उनके ही काम के लिए, उन्हीं के मेंटेनेंस के लिए, वहीं से ही अगर कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, right? And the government is also contributing, providing security measures, providing 10 other things. वो सारी चीजें I believe is something which would be which would be permitted, right? So therefore 95 में I thought option A is probably a better answer, but 95 again like 93, I think 93 and 95 are two questions जिसमें it can be argued from other sides as well, right? Okay, special has the answer key been released? Smriti, no, the answer key will be released by tomorrow afternoon से पहले आंसर की आ जाएगी, ऐसा अभी नोटिफिकेशन आया है. आप क्लैट के वेबसाइट पे if you check you'll be able to find that notification, right? So it should come out tomorrow. Yeah. Just give me 1 second, guys. Okay, sorry, there's another. So can you explain why 94 is not D? Okay, 94 is it? Not valid to the constitution has been safeguard and welfare of people. Because pilgrimage tax नहीं कर सकते ना all residents को. All residents के लिए tax अलग से नहीं किया जा सकता. आपको जो भी करना है वहीं के लिए कुछ करते तो then it would have still been fine. But everybody is going to pay tax for the pilgrimage of one particular religion, and वो tax ही होगा pilgrimage tax ताकि सबको ही pay करेंगे. That is directly what is prohibited under Article 27. Yeah, 27 में वही ही prohibited है. That's exactly what is prohibited, right? Okay, special marriage वाला again there are 2-3 conditions. At least 6 months, right? ये at least कहाँ गया? 1 year और more का living separately होना चाहिए. फिर उसके बाद court will take minimum 6 months but not later than 18 months. ठीक है? 6 महीने तक ऑर्डर पास हो नहीं सकता, लेकिन 18 महीने के ज्यादा भी डिले हो नहीं सकता. दोनों के म्यूचुअल अग्रीमेंट से होना चाहिए और एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा उनका टाइम पीरियड भी हो जाना चाहिए, राइट? नाउ दे गॉट मैरिड, मेंटल इंजरी यहां पर 3 years हो चुका है, राइट? 3 years हो चुका है एंड दे हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट दे शुड बी डिसॉल्व्ड. ठीक है, म्यूचुअल भी अग्रीमेंट है. मैरिज को भी हो चुका है, 2018 से 2021 हो चुका है. सो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल पास अ डिक्री ऑफ डिवोर्स विद इन 6 months? नो.
क्योंकि 6 महीने के बाद ही हो सकता है, राइट? 6 महीने के बाद ही हो सकता है। आफ्टर 18 months अगेन नो, बिकॉज 18 months से पहले करना है। द कोर्ट शैल नॉट इमीडिएटली पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इमीडिएटली नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद ही कर पाएंगे और 18 महीने से पहले कर पाएंगे, राइट? ओके। 97 अगेन हिंदू फीमेल एंड क्रिश्चियन मेल। इस पैसेज में सारे क्वेश्चंस में हिंदू फीमेल एंड क्रिश्चियन मेल्स की शादी हुई है, राइट? सो interesting set of questions there, but so in this again, this is a special marriage, right? uh, Here the biggest problem is Miss A has presented, so there is no mutual consent, mutual ही नहीं है, right? Mutual part is missing, तो क्योंकि mutual part is missing, दोनों के ही नहीं है, right? Because the grounds for mutual consent divorce are not fulfilled, क्योंकि दोनों बोलेंगे तभी जाके होगा, right? B was in an adulterous relationship, चरित्रहीन था, वो जो भी था जैसा भी था, म्यूचुअल कंसेंट से नहीं हो सकता। यू कैन फाइल क्रूएल्टी केस, अदर केसेस, या जो भी करना हो, बट डेफिनेटली नॉट म्यूचुअल कंसेंट, राइट? 98 अगेन, option A is correct, right? Because all the grounds, by the looks of it, all the grounds are definitely fulfilled, right? And सारे grounds fulfill होने के बाद, now the court simply has to check कि all other legal requirements जब fulfill हो जाएंगे, like 6 महीने का time बीत जाएगा और ये सब हो जाएगा, then the court will be able to grant the divorce, right? 99 option D, both A and B, all other legal requirements, ये part भी सही है, right? This district court may pass a decree of divorce 6 months after the date of presentation of the petition, ये भी बात सही है। So both A and B I would think is the best answer, क्योंकि 6 महीने बाद ही करना है और 18 महीने से पहले करना है। बाकी सारी चीजें अगर फुलफिल हो जा रही हैं, वो एफिडेविट साइन करके दे दे, right? All of that has happened, then it is possible. Although here the problem is via video conferencing का जो aspect है, via video conferencing does not really mean affidavit, right? Passage talks about the fact कि physical presence is not required, but physical presence का exception affidavit दिया हुआ है, right? Physical presence का जो exception दिया हुआ है वो video conferencing नहीं दिया हुआ है. The exception given is affidavit. Now in this case affidavit has not been filed, right? So क्योंकि affidavit file ही नहीं हुआ है, you could also go with option B actually as the better answer, and option A क्योंकि conditions ही नहीं fulfill हुए हैं, affidavit ही नहीं दिया गया है, probably B is going to be the safer answer, right? And I mean, to be honest, again, this is one of those questions you can completely flip it, and you can also say कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब एफिडेविट नहीं हुआ है, एफिडेविट नहीं हुआ है मतलब कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए, और कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए तो मतलब डिवोर्स ही नहीं मिलेगा। तो इट्स पॉसिबल टू आर्ग्यू सी आल्सो, राइट? सो 93 में ऐसा प्रॉब्लम था, 95 में था, एंड आई थिंक 99 इन पर्टिकुलर is also one of those questions जिसमें it could at least be possible to kind of argue from some of the other perspectives, right? This question was very straightforward. Option C is the correct answer. Mutual consent था ही नहीं, right? The consent of Miss A was obtained by fraud, so which means there is no actual mutual consent, and mutual consent अगर है नहीं तो of course divorce नहीं हो सकता है, right? And the last passage was about writ petitions. It says A presented a petition. Yeah, A presented a petition through mutual consent. No, Smriti. A presented से नहीं फर्क पड़ेगा, jointly present करना पड़ेगा, no? That's why. Okay. Okay. So writ petitions is the last part, the last passage that came in today's CLAT examination 2022, and the whole focus was on the writ of mandamus, right? पूरा focus mandamus पे था, but easy questions थे guys. I am sure सबने सही किया होगा. Yeah, mandamus is obviously a public law remedy, so यहाँ पर I would think 101 में option C is the better answer.
102 अगेन इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए लॉ बनाना, लेकिन लॉ बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, राइट? गवर्नमेंट कैनॉट बी फोर्स्ड टू मेक अ लॉ, गवर्नमेंट कैनॉट बी फोर्स्ड टू मेक अ लॉ by way of a writ of mandamus, therefore B is the correct answer. 103 में mandamus प्राइवेट रेमेडीज के लिए नहीं होता है. mandamus is not about private remedies, mandamus is about public remedy and so on. Government या public authority या person occupying a public office, इन सब के खिलाफ केस हो सकता है, प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ नहीं हो सकता. therefore 103 में ऑप्शन सी. 104 will be option A, right? क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, राइट? ड्यूटी अगर है और सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए तो लाइसेंसिंग ऑफिसर जो भी है वो पब्लिक ऑफिसर है, ऑफिसर ऑक्यूपाइंग अ पब्लिक ऑफिस, अरे पर्सन ऑक्यूपाइंग अ पब्लिक ऑफिस, उसके खिलाफ मैंडमस बिल्कुल फाइल किया जा सकता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, फिर से हमारे इनकरेक्ट की कहानी आगे बढ़ती हुई. writ of mandamus may be requested to be issued to compel performance of private duties, नहीं हो सकता है, which means option D is the correct answer, because पूछा क्या है, which of the following is incorrect, and therefore D is the correct answer as far as this particular thing is concerned. राइट, सो लेट्स सी गाइस, बस कल सुबह की बात है. आई थिंक आप लोग सब भी बस हमारा लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश का थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग का एनालिसिस इज स्टिल पेंडिंग, जस्ट अ लिटिल बिट क्रिटिकल रीजनिंग. सो आई थिंक we'll get started with that in about 5 minutes flat. So a little past midnight we will be done with the entire analysis, and कल हमारा आंसर की दोपहर से पहले आ जाएगा. Do stay tuned in for the final answer key as committed by the CLAT. If we have some disagreements with that answer key, we will of course encourage you guys to file your own complaints with the CLAT consortium and so on. Thank you very, very much everyone. All the very best for looking at the answer key and waiting for the results, which is coming out very, very soon on the 24th of June. Have a peaceful night and a peaceful few days ahead of you till then. Thank you very much and a very, very good night to all of you. Bye bye everyone.